Hello everyone, I'm Dr. Preeti Jindal, Director of the Touch Clinic, which is an advanced gynae and IVF center, and we deal with all high-risk pregnancies, IVF and cosmetic gynae cases and difficult gynecological cases. As you all are aware, we are doing these Friday webinars to make you acquainted about the different problems which are faced by women in pregnancy, and they would like to discuss about them. So today's topic is what are the health issues which can develop during pregnancy, like thyroid problem, diabetes, DVT, high blood pressure, etc., RH negative pregnancy, and what is their effect on the baby. So what are the medical conditions which complicate pregnancy? In almost 80 to 90% of pregnancies, there is no problem. They are uneventful and they are known as healthy normal pregnancies. Pregnancy we do not take as a medical problem, we take it as a natural change in a woman's life, because women are made in a way to bear a child and give birth to a child. But in around 10 to 15% of cases, this pregnancy may become eventful and may develop complicating factor. So all the antenatal care or obstetrical care and which you see around the pregnancy is to detect those 10% of women who may develop some complication during the pregnancy and childbirth. And it is very important because pregnancy happens in young, healthy women. And it is something by choice. And it is not expected that one should have any morbidities or they may lose their life or their baby's life in present day era. So that's why antenatal care is offered all over the world to keep the women and the child healthy. So the main problems which develop during pregnancies are diabetes, that is increased blood sugar, high blood pressure, hypothyroid, deep vein thrombosis, and if you have a blood group Rh negative and your husband is Rh positive, then you may have some complications in your pregnancy, which we are going to tell you in this webinar. So what is diabetes? Diabetes means increase in blood sugar levels. Many times we see that normally a woman is having a normal blood sugar, but once she becomes pregnant, the blood sugar levels increase. So why is it? The main reason is that pregnancy is a stressful condition and it makes obscure diabetes overt. Means you have a tendency for diabetes, and whenever you come under any stress, now stress does not mean only mental stress, the physical stress like infection, pregnancy, or excessive weight gain, all these things, and then the diabetes or blood sugar levels, they start rising and your body is not able to cope up with it. If you develop diabetes during pregnancy, that is known as gestational diabetes. That is high blood glucose levels in the mother. Now these high blood glucose levels, they go to the baby and they bring extra glucose to the baby. As a result, baby gains unhealthy weight. Any degree of glucose intolerance with onset or first recognition during pregnancy is called gestational diabetes. So what is pre-gestational diabetes? That is diabetes diagnosed before pregnancy. We always tell that women or couple who are planning to have a baby, they should always come for a pre-pregnancy advice, because that time few blood tests should be done, like their blood sugar levels, thyroid levels, their blood group should be tested, HB electrophoresis has to be done to rule out thalassemia, rubella, varicella, IgG antibodies should be tested, so that once you are absolutely healthy, then you should plan the baby. Many couples are nowadays coming for pre-pregnancy counseling, which is very good. But for those who do not come for pre-pregnancy counseling, in them we have to be very careful about these problems. What are the risk factors for gestational diabetes or diabetes during pregnancy? Increasing maternal age and weight, previous history of diabetes in your previous pregnancy, previous very big size baby, anything reaching 4 kg is considered to be macrosomic baby. Family history of diabetes among first degree relatives, because genes are considered to be one of the main reasons for developing diabetes. And ethnic background. It is especially true
for the people who are living outside India, where there's too much of international population, in India, Asian population anyway is prone for diabetes because of the diabetic genes in them. So how should the diabetic screening should be done? If you are absolutely healthy and you do not have any of the previous risk factors which I mentioned, then 75-gram glucose tolerance test should be done around 22 to 24 weeks of pregnancy. And in this, what is done? Three samples are taken, one fasting, and then you drink 75 gram of glucose. And after drinking, first sample is taken 1 hour after, and second sample is taken uh, after 2 hours of drinking. That means total three samples, one fasting, 1 hour after taking the sugar, and second 2 hours after taking the 75-gram glucose. Now, there are other type of screening tests also. One is if you do fasting, many people are not able to drink 75-gram glucose. So in them, fasting blood sugar levels are taken or the random blood sugar levels are taken. Then postprandial sugar levels 2 hours after meal can also be taken. And HbA1c can be checked. HbA1c tells us our sugar control in last 3 months. There's something known as GCT, glucose tolerance. GCT is challenge test in which you take your normal breakfast and 1 hour after the breakfast the blood sugar level is done. But GTT is definitely more specific. In case you have any high risk factor, then GTT has to be done on the first visit or as early as possible. Your doctor thinks it's appropriate. Then we do not wait till 24 weeks. So what are the normal values for your GTT screening? Your fasting should be around 95 or less. 1 hour after having sugar is around 180 and 2 hours after is 155. If even one sugar level is higher than this, then it is known as gestational diabetes. Many girls are not able to take so much of sugar, so you can add lime into it, and you can also have normal water in between. And if you take sip by sip over some 5 to 10 minutes and you add lemon in it, then you are able to drink it. If values are more than 200 milligrams, then it is an over diabetes. Once your GTT has come abnormal, then it is not repeated in the pregnancy and the treatment is started. You can do monitoring at home. Fasting blood sugar, the target is to maintain it around 100 and 2 hours after post meal around 140 to 150 is okay. So what complications can happen? One may have a macrosomic or big size baby. Now, looking at this baby, you feel so, the baby is so adorable, but then baby is sick. Baby is having excessive weight gain. So it increases the chance of having a cesarean section. Also, because of the fat deposition, it has been seen that the childhood obesity is linked to later development of diabetes in these babies. If the big size baby, more than 4 kg baby is tried for a vaginal delivery, then there is a risk of shoulder dystocia, in which what happens, the shoulder, which is the maximum diameter, gets stuck in the birth canal and it may become impossible to save the baby. So by the guidelines, if any child is more than 4 kg, then and the mother is of average build, then the mother is discouraged to have a vaginal delivery. Now, diabetes has problem not only for the baby, there are lots of complications to the mother as well as to the baby. In pregnancy, if you have diabetes, then you can have increased preeclampsia, that is a condition in your blood pressure may increase and you may get convulsions. Also, if you have diabetes, you're more prone to infections, vaginal infections and other infections. Thirdly, diabetes affects your eyes, your heart, your liver. So there may be a problem with you may develop diabetic retinopathy. Your lungs may be affected, your heart may be affected, blood pressure will increase, there may be effusions in the heart, and also there is risk because of the infection you may develop. At the present time, there is scare of COVID, so you will become more prone to COVID also. And COVID affects more in the diabetic people. During the labor, there is increased risk of induction, increased risk of cesarean, increased risk of operative deliveries and labor complications. And post-delivery, there is risk, lifelong risk of developing the diabetes. In the babies, there may be a risk of sudden IUD, means these babies may suddenly, they may die. So this is a very, very major complication which can happen in the child. Then the child's nervous system may be affected, heart may be affected, they may become large for gestational age and later they may develop
diabetes. So long-term outcome are they may develop the metabolic syndromes. So if you have diabetes, then what to do? Do not worry. The one thing which is very important is once you are diagnosed to have diabetes, you need to consult a high risk obstetrician. The local doctor may not be able to manage. So it's always better to ask your doctor whether they are they are experienced enough to manage diabetes in pregnancy. Secondly, all pregnant women who test positive for GDM for the first time should be started on a medical nutritional therapy and physical exercises. At Touch Clinic, this is a high risk pregnancy center, and I'm trained to have look after the women for diabetes. I've done a certified course on it. So over here, all the patients who are diabetic in pregnancy, they are given a nutritional consultation by a trained nutritionist, a very senior nutritionist. Then our physiotherapist trains them about the exercises. We teach our women how to take care of their blood sugar levels, how to look after their sugar levels at their home. They are trained to do their own sugar testing. And if required, an endocrinologist consultation is also taken. It's always advised that women should walk or exercise for 30 minutes a day, and after every meal, they should walk for at least 15 to 20 minutes. After 2 weeks, their diet and physical exercises should be reviewed, and 2 hours postprandial blood sugar level is managed. Remember, once you develop diabetes, you do not have to take the glucose load again. Depending on their weight, the diet plan varies between 1800 to 2000 kilocalories diet. Nowadays, we tell the diet is not sugar negative diet. The diet is calorie based diet, so in which the carbohydrate is also, you can take some amount of carbohydrates also, provided your calories are matched. So if you have diabetes, you don't have to think that you cannot eat or drink anything. Whatever you like, you can have in a proper amount, which our nutritionist will help you. Of course, you have to reduce the carbohydrate intake and you have to take more proteins in the diet. Complex carbohydrates can be taken like whole grain cereals, oats, bajra, jowar, ragi, whole pulses, vegetables, and fruits with skin should be preferred. Simple and unhealthy carbohydrates like sweets, cakes, puddings, sweet biscuits, juice, soft drinks should be avoided. And of course, once a while, cheat days can be given after talking to the nutritionist. If your postprandial means after meal sugar is less than 120, self-monitoring can be done. And if 2 hours was more than 120, medication has to be started. And nowadays, it's not necessary that you have to go on insulin. The endocrinologists are taken in the loop, and metformin is a very good drug which can be started and you can take it. So management basically moves around your diet, exercise, medicines. Insulin is very safe in pregnancy. It does not cross the placenta. It's one of the safest drug in pregnancy to be given. So if need be, then insulin can be given. And at times we also give steroid at around 32, 33 weeks for the fetal lung maturity, because in diabetic patients, the baby's lung, they mature less. So to enhance their maturity, 2 doses of betamethasone is given or dexamethasone is given, but under control setting by checking their blood sugar levels, because steroid transiently increase the sugar level for 1 or 2 days. So it has to be a shared care between an obstetrician, neonatologist, endocrinologist, dietitian, and physiotherapist. And it's very important that you should be in a high-risk pregnancy center. Now coming to the high blood pressure in pregnancy, around 10 to 15% of women in pregnancy may develop high blood pressure. Any blood pressure more than 140 by 90 millimeters of mercury is taken to be high blood pressure, and it's known as pregnancy-induced hypertension. If it is developed after 20 weeks of pregnancy. So booking blood pressures are very important. If you have normal blood pressure till 20 weeks and then your blood pressure starts increasing, then it is known as pregnancy-induced hypertension. But if you have high blood pressure before 20 weeks, it is known as chronic hypertension. So both hypertensions are not good, but pregnancy-induced hypertension is more harmful in pregnancy, and chronic hypertension is still better because you are used to your high blood pressures. You already have a physician and it can be managed in a better way. So you have to seek medical attention urgently if you have a high blood pressure in pregnancy. Also, you may develop a severe headache, blurred vision, sudden swelling of face, hands, feet, or pain in upper abdomen.
All these are danger signals of high blood pressure. So once you have a high blood pressure, whether it is a chronic or pregnancy induced, or it is associated with preeclampsia, means edema or swelling in the body and protein in your urines, or eclampsia means you are having a convulsion, then in any of these conditions, you cannot be managed by a simple obstetrician. You have to take care help of a high risk pregnancy specialist, and it has to be a shared care. So if you develop swelling or there is protein in the urine, so it's very important that after 20 weeks of pregnancy, and if your blood pressures are high, your urine should be checked. And in all women, after 36 weeks of pregnancy, at every visit, urine dipstick should be done. In your urine sample, a stick is dipped and we check it for the proteins. It's always done at Touch Clinic, that whether there is a protein excretion in your urine, or if you develop suddenly your BP is okay, but you gain too much of weight, or there is puffiness of the face, swelling of arms, of your hands, of your feet, ankle, then also we know that you are moving towards the preeclampsia and your care has to be taken. It is also known as toxemia of pregnancy. It's a major cause of maternal mortality in India and is associated with poor outcome of pregnancy if left uncared for. But if taken proper care, then the outcome is very good. So, what is the impact of high blood pressure on mother? So, high blood pressure, if we start from the top, it will affect your eyes, it will affect your kidneys, your liver. It can lead to preterm delivery because of the high blood pressure. Then it may increase the risk of cesarean and placental abruption, means suddenly detachment of the placenta, in which there is sudden bleeding inside the uterine cavity, and one may lose the baby if not immediately taken care of. Many times it goes undiagnosed, unfortunately, and then it becomes very difficult to save the child, and most of the babies are lost. But then, if you are careful and your doctor is careful, then in most of the cases, this catastrophe can be saved. So, what are the high risk factors of developing blood pressure? So, first, pregnancy is always a high risk factor. Age more than 40, high blood pressure before becoming pregnant, high blood pressure during past pregnancy, family history, history of diabetes, as I've already said. If you're overweight, you have kidney disease, or you have multiple babies like twins or triplets. And in assisted reproduction like IVF and IUI pregnancies, also it is believed that there is increased risk of developing high blood pressure. During high blood pressure, you may excrete urine and protein in your urine, which is known as proteinuria. They will be swelling on the face and hand. They may not be swelling, but your blood pressure may be high. There can be a type of throbbing headache around here, and it's not going away. Then the vision may become blurred. There will be pain in the upper right part of your tummy, and that is because of the liver affection. Because of the capsule of the liver starts stretching, and you may get the pain. And there will be breathing problem, and these are late symptoms. So, what is the management? The first management, it has to be multidisciplinary care. There should be high risk pregnancy center which is looking after your care. Touch Clinic is a high risk pregnancy taking care center. You should have adequate rest. There should be restriction of salt, and there should be a nutritional advice on what to take, what not to take. You have to eat healthy. Exercises should be advised to you, which our physiotherapist does. Then there are few medications which we may put you on if your blood pressures are continuously high. We will give you BP apparatus to monitor your blood pressure at home, and you have to make a diary of it and inform us. Most important is that you have to be positive, because if taken care of nicely, then you will sail through your pregnancy. So blood tests are done every week or fortnightly, and these are renal function tests, liver function tests, CBC, your coagulogram, uric acid is very important to be tested, and the urinary proteins. Now, in the delivery part, it's very important that you should deliver at a center which has facility for the NICU, because if you have a high blood pressure, then the only way of controlling, of making this problem sorted is your delivery. So we have to take your delivery till that stage when the baby after delivery will be healthy and you are also healthy. So when once you develop high blood pressure in pregnancy, the permanent cure is delivery only. All the medications and all the care is done till you reach at least 34, more than 34 weeks, so that your delivery does not put risk to the child. So your delivery has to be in a center
where there is nursery and there are facilities to look after the baby. If we take adequate care, then in most cases the delivery can be postponed till 37 weeks. 37 weeks is taken as term, but then it should be in a center which is having facilities for tertiary NICU care. Your doctors should be experienced in monitoring you. The gynecologist should be experienced in doing their own ultrasounds. Doppler should be done, and a proper care has to be taken of both mother and baby. So do not worry if you develop these complications, but choose your center well, and you should be well informed. Next problem which we see is the hypothyroidism in pregnancy, for which I will invite Dr. Riddhi, who is a consultant with me in the Touch Clinic, and she will take you through this problem. Thank you. See you on the next webinar. Take care. Stay safe. Thank you, Preeti ma'am. I'll carry forward with the webinar. So ma'am ने अभी तक जो discuss किया है, she has discussed about diabetes, which is very common, and then high BP, right? Another problem which we come across in pregnancy is hypothyroidism. Now what happens, जैसे ही आपकी pregnancy diagnose होती है, आप हमारे पास आते हैं, we get your blood tests done. उसमें सबसे important test जो होता है that is beta HCG, your blood group, and जो तीसरा test है that is thyroid. ना थायराइड का क्या इम्प्लीकेशन है, क्यों हम फर्स्ट विजिट पर ही थायराइड कराते हैं? उसका रीजन ये है कि थायराइड की रिक्वायरमेंट जो है इट कीप्स ऑन चेंजिंग इन प्रेगनेंसी. अगर आप पहले से ही किसी थायराइड की मेडिसिन पर हैं बिफोर यू कंसीव, तो वी मे हैव टू इंक्रीज द डोज, राइट? और समटाइम्स व्हाट हैपेंस, बहुत ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको कभी थायराइड पहले कभी नहीं हुआ, बट वो प्रेगनेंसी में फॉर द फर्स्ट टाइम डेवलप हो जाता है. नाउ अगर बाय चांस थायराइड की प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है, इट हैज टू बी ट्रीटेड. व्हाई? क्योंकि जो 4 to 8 वीक्स का टाइम है दैट इज नोन एज ऑर्गेनोजेनेसिस. ऑर्गेनोजेनेसिस मींस बेबी के सारे ऑर्गन्स बनते हैं. इट हैज बीन सीन दैट इन पेशेंट्स जिनमें हम थायराइड का ट्रीटमेंट नहीं करते, आगे जाकर उन बेबीज में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखी जा सकती हैं. थायराइड होता क्या है? थायराइड हार्मोन होता है जो हमारे थायराइड ग्लैंड में सिक्रीट होता है. ये नेक में एक ग्लैंड होता है, एंड लॉट ऑफ पेशेंट्स होते हैं जिनके थायराइड अगर डायग्नोस होते हैं तो वो इस डर से कि एक बार थायराइड की मेडिसिन जो है अगर वो स्टार्ट हो गई तो वो कभी भी लाइफ लॉन्ग हमें खानी पड़ेगी, वो स्टॉप नहीं होगी, वो स्टार्ट ही नहीं करते एंड दे गो फॉर होम्योपैथी मेडिसिन. बट the biggest thing is that होम्योपैथी मेडिसिन का प्रेगनेंसी पर क्या इम्पैक्ट है वी डोंट नो. हमें क्या पता वो बेबी के लिए सेफ भी है या नहीं है. सो इफ यू आर डिटेक्टेड विद थायराइड प्रॉब्लम इन प्रेगनेंसी, यू शुड बी गिवन द मेडिकेशन फॉर दैट. थायरोनॉम सिंपल सी टैबलेट्स आती हैं एंड बहुत लो डोज से शुरू किया जाता है. प्लीज डू नॉट गो फॉर होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर थायराइड. So जब आप हमारे पास आते हैं, we get your TSH, FT3, free T3 and free T4 hormones. एंड वो हर ट्राइमेस्टर में क्यों करवाए जाते हैं? जैसे मैंने आपको बताया है कि हर ट्राइमेस्टर में जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है, थायराइड की रिक्वायरमेंट जो है वो बदलती रहती है. सो अगर TSH बहुत लो आता है हमारा और आप ऑलरेडी थायराइड की मेडिसिन पर हो, तो हो सकता है आप थोड़ी सी डोज कम कर देते हैं. सिमिलरली TSH अगर हाई आ रहा है डिस्पाइट थायराइड मेडिकेशन, वी मे हैव टू इंक्रीज द डोसेज. सो ट्रीटमेंट का गोल ये है कि जो हमारे थायराइड की वैल्यूज हैं, दे शुड लाई विद इन द नॉर्मल रेंज. So earlier studies they found that children who were born to mothers with severe untreated hypothyroidism during pregnancy had lower IQ scores and impaired psychomotor development. So it is very important कि thyroid की medicine should be started as early as it is diagnosed in pregnancy. If properly controlled, often by increasing the amount of thyroid hormone, women with hypothyroidism can have healthy and totally unaffected babies. Next condition we come across is DVT in pregnancy. बहुत से सेंटर्स हैं जहाँ पर DVT के लिए इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती पेशेंट्स को. और जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, इवन एट फर्स्ट विजिट, जैसे ही प्रेगनेंसी डायग्नोस होती है, हम अपने सब पेशेंट्स को समझाते हैं कि व्हाट इज DVT और उसका क्या इम्प्लीकेशन है. और DVT क्या होता है? आपने देखा होगा कि लेग्स में ब्लूइश वेन्स होती हैं जिन्हें कहते हैं वेरिकोस वेन्स, राइट? किसी किसी में ये नॉर्मली भी होती हैं, स्पेशली जो टॉल होते हैं उनमें होती हैं, जिनकी प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग प्रोलॉन्ग सिटिंग जॉब्स है, उनमें वेरिकोस वेन्स होती हैं. नाउ
प्रेगनेंसी जो एक कंडीशन है, इट इज अ स्टेट जिसमें हाइपर कोएगुलेबिलिटी हो जाती है। हाइपर कोएगुलेबिलिटी मींस ब्लड की क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। अब प्रेगनेंसी में ही क्यों बढ़ती है, उसके रीजन है। एक तो प्रेगनेंसी में हार्मोन्स जो है वो अल्टर होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ता है, उसकी वजह से भी ब्लड गाढ़ा होने की टेंडेंसी होती है। दूसरा जो बेबी है, जैसे जैसे टमी बढ़ती है, बेबी जो है स्पेशली जब आप लास्ट के 3 मंथ्स होते हैं, उस टाइम पे बेबी प्रेस करता है तो वो कूलिंग ऑफ ब्लड वेसल्स को प्रेस करता है, तो दैट कॉजेस कूलिंग ऑफ ब्लड इन द लेग्स। सो प्रेगनेंसी इज अ स्टेज ऑफ हाइपर कोएगुलेबिलिटी, मींस प्रेगनेंसी में डीवीटी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा, आजकल कोविड बहुत फैला हुआ है, एंड बाय चांस गॉड फॉरबिड अगर कोविड हो जाता है प्रेगनेंसी में, सो इट अगेन लीड्स टू हाइपर कोएगुलेबिलिटी। और समटाइम्स क्या होता है कि लेग्स में क्लॉट बन जाता है, तो दैट क्लॉट कैन इवन माइग्रेट टू हार्ट एंड इट कैन इवन किल अ मदर। सो डीवीटी कैन बी अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन मदर्स, सो इट हैज टू बी टेकन सीरियसली। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि प्रेगनेंसी में डीवीटी का रिस्क क्यों बढ़ जाता है। सो व्हाट आर द सिम्टम्स? सिम्टम्स में क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा काफ मसल्स में पेन होगी, स्वेलिंग होगी। अगर आप उनको टच करके देखेंगे तो दे विल बी वार्म टू टच, एंड ब्रूजिंग इज ब्लूइश ब्लूइश स्पॉट्स दिख सकते हैं, या डायलेटेड वेन्स दिख सकती हैं, या रेडनेस हो सकती है काफ मसल्स में। So before we develop DVT, the best part is we have to take the precautions. Precautions कैसे ली जाए? We have DVT stockings for that. Now, what are DVT stockings? DVT stockings special compression stockings होते हैं. They are not your ordinary black stockings which you wear. They are special compression stockings which are very tightly fitted in your legs, right? इसके अलग अलग sizes आते हैं, knee length तक होती है, thighs तक भी होती है। और इनका मेन पर्पस क्या होता है कि दे कीप ऑन पूलिंग द ब्लड, वो पंप करते हैं ब्लड को, दे प्रिवेंट द पूलिंग एंड दे कीप ऑन पंपिंग द ब्लड टुवर्ड्स द बेबी। सो इट इंक्रीजेस द ब्लड सप्लाई टू द बेबी, और ब्लड जो है वो लेग्स में नहीं इकट्ठा होने देते, सो ये वेरिकोस वेन्स को प्रिवेंट करते हैं डेवलप होने में। नाउ डीवीटी स्टॉकिंग्स should be worn by all the pregnant mothers in the first 3 months and in the last 3 months, plus after delivery for 6 weeks, because हम इतनी physically active नहीं होते, तो 6 weeks तक after delivery all the mothers they have to wear DVT stockings. Secondly, अगर आप कभी भी travel plan करते हैं during pregnancy, कहीं पर भी जहाँ पर आपकी journey more than 2 hours हो, you should wear the DVT stockings. And they are washable stockings, so आप single pair ले सकते हैं, उनको wash करके you can reuse them. Another important thing is RH negative pregnancy. Now, RH negative pregnancy का बहुत लोगों को मन में एक स्ट्रेस होता है कि what is RH negative pregnancy, इसका क्या implication होगा हमारे बेबी पर। What is RH negative pregnancy means, जो pregnant mother है उसका blood group जो है वो negative है, maybe A negative, B negative, O negative, AB negative, जो भी है, but the blood group is negative. Now, अगर तो husband का blood group भी negative है, then there is no problem, because दोनों का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, सो बेबी का भी ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। बट अगर हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, देन इट इज प्रॉब्लमैटिक, बिकॉज बेबी का ब्लड ग्रुप कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। वो हमें कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली हमें नहीं पता चल सकता बिफोर डिलीवरी। सो अगर बेबी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो कोई चक्कर नहीं है, बट अगर पॉजिटिव है, देन व्हाट हैपेंस कि आपका नेगेटिव है, बेबी का पॉजिटिव है, तो वो एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है जो बेबी के ब्लड के साथ क्रॉस रिएक्ट होना शुरू हो जाती है, जिससे क्या होता है आगे जाकर हिमोलिसिस एंड बेबी में एनीमिया वगैरह डेवलप हो जाता है, डॉपलर्स जाके डिरेंज होना शुरू हो जाते हैं। बट RH नेगेटिव प्रेगनेंसी का जो इम्प्लीकेशन होता है यूजुअली फर्स्ट प्रेगनेंसी पर नहीं होता, बट ऑन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज, अगर आप सेकंड या थर्ड टाइम के लिए प्रेग्नेंट है, मतलब सेकंड बेबी या थर्ड बेबी के टाइम पर, देयर आर मोर चांसेस ऑफ these problems to establish. तो हमें करना क्या होता है? नथिंग हैज टू बी डन, यू डोंट हैव टू वरी। हम आईसीटी कराते हैं, सिंपल आईसीटी कराते हैं ईच ट्राइमेस्टर। अगर तो आईसीटी इज इनडायरेक्ट वुम्स टेस्ट, राइट। अगर आईसीटी नेगेटिव आता है, देन नथिंग हैज टू बी डन, कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट ट्राइमेस्टर में हम फिर से करा लेंगे, थर्ड ट्राइमेस्टर में फिर से करवा लेंगे। बट अगर कभी भी आईसीटी पॉजिटिव आता है, देन वी गो फॉर टाइटर्स। टाइटर्स क्या है कि कितना क्वांटिटी उसकी पॉजिटिव है। इसके टाइटर्स होते हैं 1:4, 1:8, 1:16, एंड देन अकॉर्डिंगली वी डिसाइड कि हमें आगे क्या करना है। नाउ समटाइम्स व्हाट हैपेंस
एनटीडी का इंजेक्शन जो है वो लगाया जाता है ना, कब लगाया जाता है? 28 weeks per NTD injection is given to all the pregnant mothers who are RH negative and husband blood group RH positive है तब. बट अगर बिफोर 28 वीक्स कभी भी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होती है, एनी एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग, चाहे वो स्पॉटिंग हो रही है, एंटीडी इंजेक्शन हैज टू बी गिवन टू द मदर आफ्टर एनी ब्लीडिंग एपिसोड. समटाइम्स आफ्टर गिविंग एंटीडी इंजेक्शन आईसीटी टाइटर्स थोड़े वीकली पॉजिटिव आ जाते हैं, तो टिल 1:8 हमें नथिंग हैज टू बी डन, वी जस्ट हैव टू मॉनिटर. हम थोड़े टाइम बाद फिर से आपका आईसीटी टाइटर्स करवा लेंगे. सपोजिटली वो 1:16 आ जाते हैं, तब भी हमें क्या करना है? हमें डॉपलर्स करने हैं उनके, हमें मॉनिटर करना है बेबी को कि बेबी में जो वैस्कुलर सप्लाई, जो बेबी की ब्लड सप्लाई है वो ठीक है कि नहीं. अगर बाय चांस डॉपलर्स डिरेंज होते हैं, देन वी हैव टू डिलीवर द बेबी. So NTG injection has to be given to all the pregnant mothers at 28 weeks of pregnancy, or if before 28 weeks any episode of bleeding occurs in pregnancy, and आफ्टर डिलीवरी. अब एक बार डिलीवरी हो जाती है तो बेबी का ब्लड ग्रुप किया जाता है, और अगर बेबी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है देन तो वी आर सॉर्टेड कि आपका भी नेगेटिव है, बेबी का भी नेगेटिव है, नथिंग हैज टू बी डन. बट if baby's blood group comes out to be positive, then another NTD injection has to be given to you within 72 hours of delivery. हम सब पेशेंट्स को रिमाइंड करवाते हैं, प्लस वी ऑल्सो कीप इन माइंड कि एंटीडी इंजेक्शन हमारे सारे पेशेंट्स को विदिन 72 आवर्स लग जाए. So RH negative pregnancy is not to scare you. It is just that you have to be cautious, and जो भी additional injections हैं, they should be given to you in time. That is it. So these were the basic problems जो pregnant mothers encounter करती हैं. Most common problems जो हैं जिनके लिए anxiety establish होती है. And if you have any queries, you can ask us. आप type कर सकते हैं. We can answer all your queries. And that is it. Now I invite Anshul, and she'll brief you about whatever services are available at our clinic. Thank you. Thank you so much, ma'am. Now we will ending up the session by telling you some information about our touch clinic services. We take all precautions of COVID-19 in our clinic. Consultation with prior appointments only. COVID testing is done prior to delivery or any surgery. We take care of all the safety parameters in our clinic. We have a pharmacy. You can order medicine at your doorstep by calling on the number 0172 5032467 and 96131 12000. आप इन नंबर्स पे कॉल करके जो मेडिसिन है वो अपने घर पे मंगवा सकते हैं. We have our lab also. You can call on the number 99157 48821 और 99154 96821. आप इन नंबर्स पे कॉल करके हमारे एग्जीक्यूटिव को होम ब्लड सैंपल कलेक्शन के लिए बुला सकते हैं. और अगर किसी पेशेंट ने डॉक्टर प्रीति जिंदल के साथ कंसल्टेशन करनी है, वीडियो कॉल पे फोन कंसल्टेशन करनी है या आके विजिट करना है हमारे क्लिनिक में, तो जो हमारे नंबर्स है फॉर द वीडियो कंसल्टेशन एंड फोन कंसल्टेशन के लिए वो है 99157 48821 एंड 9888448803. आप इन नंबर्स पे कॉल करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं. जो टाइमिंग्स रहेंगे वो है 10 AM to 6 PM, और हमारा क्लिनिक भी 10 AM to 6 PM जो है वो ओपन है. उसके लिए जो हमारा क्लिनिक का एड्रेस है मैं आपको एक बार कंफर्म कर देती हूँ. हमारे क्लिनिक का एड्रेस है द टच क्लिनिक A5A8 बेस्टिक बिजनेस टावर्स सेक्टर 66 मोहाली में है. होम केयर सर्विस हम एवरी टाइम आपको जो है वेबिनार में बताते हैं. हमारा 10 डेज का प्लान रहता है होम केयर सर्विसेज का फॉर माइल्ड पेशेंट्स का, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो घर पे ही क्वारंटीन होके जो है कोविड से ठीक हो सकते हैं. तो उसके पैकेजेस होते हैं हमारे जो है 2 पैकेजेस है. एक सिंगल मेंबर पैकेज है जो 6000 का है, जिसमें एक ही पेशेंट इनरोल होता है, और एक फैमिली पैकेज है जो 10,000 का है, जिसमें 3 मेंबर्स घर के जो है इनरोल होते हैं. इसमें आपको डेली कंसल्टेशन होती है. हमारे डॉक्टर डेली आपको कॉल करते हैं और आपका जो है प्रॉपर हिस्ट्री ली जाएगी. आपके डेली आपकी जो भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उसके बारे में बताया जाएगा. जो भी मेडिसिन आपको प्रोवाइड करवानी है उस टाइम पे बताया जाएगा. और हमारी नर्स जो है वो डेली आपको मॉर्निंग इवनिंग कॉल करेंगे, जो आपके वाइटल्स जो है वो रिकॉर्ड करेंगे. और
आपको डेली बताएंगे कि आपका जो है वाइटल्स में कहाँ पे जो है क्या मतलब वो हाई हो रहा है, लो हो रहा है, जैसे हार्ट रेट हो गया, ऑक्सीजन हो गया, या फिर टेम्परेचर देखा जाएगा। तो वो पूरा ट्रैक रखती है हमारी नर्स। इसके लिए हम प्रॉपर नर्स जो है वो असाइन करते हैं, जो आपको दिन में 2 बार कॉल करते हैं। इसमें अगर ब्लड रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे ब्लड सैंपल कलेक्शन की रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, या फिर होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन जो आप अपने घर पे बुलाना चाहते हैं, मंगवाना चाहते हैं, अगर आपको उधर नियर बाय नहीं मिलती है तो आप वो मंगवा सकते हैं, जिसकी लैब कॉस्ट एक्स्ट्रा रहेगी और मेडिसिन कॉस्ट भी एक्स्ट्रा रहेगी, राइट। सो ये तो रहा हमारा आज का जो टॉपिक था, वो था प्रेगनेंसी के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज ऑन इनफर्टिलिटी। जैसे कि आप सबको पता है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि एवरी ट्यूसडे एंड एवरी फ्राइडे हमारे वेबिनार्स होते हैं। ट्यूसडे को जो होते हैं वो इनफर्टिलिटी के होते हैं, एंड जो फ्राइडे को होते हैं दैट वेबिनार्स इज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड इट्स मिथ्स। बट जैसे कि आपको पता है कि नेक्स्ट वीक इज दिवाली वीक, तो हम उस वीक में हमने कोई भी वेबिनार नहीं रखा है कि कोई मिस ना हो जाए, तो इसलिए नेक्स्ट वीक हमारा कोई वेबिनार नहीं है। अब हमारा जो आएगा वेबिनार, वो आएगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में, ठीक है जी। तो अब हमारा जो नेक्स्ट वेबिनार रहेगा वो रहेगा इनफर्टिलिटी के ऊपर, जो रहेगा 17 नवंबर को। बिकॉज नेक्स्ट वीक का जो फ्राइडे का ट्यूसडे का वेबिनार है वो नहीं है ड्यू टू दिवाली। तो अब हम नेक्स्ट आपको मिलेंगे 17 नवंबर को, जिसमें हम इनफर्टिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन उसके बाद हमारा 20th को रहेगा जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। तो अगर किसी को किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन लेनी है, या किसी ने जो है बीच में ज्वाइन किया है, जो वेबिनार सुनना चाहता है, तो वो हमारी वेबसाइट पे जा सकता है। हमारी वेबसाइट है www.thetouchclinic.com। उस पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, सारे वेबिनार्स की। और कुछ भी अगर ब्लॉग्स वगैरह आपने उसमें पढ़ने हैं, या कोविड से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी है, आपको वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। सो नाउ आई एम एंडिंग अप दिस सेशन। मैंने आपको ऑलरेडी सारा कुछ बता दिया है। फिर भी किसी को कुछ प्रॉब्लम रहता है, कुछ डिस्कस करना चाहता है, तो वो हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकता है। नंबर्स है 9915748821। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर पेशेंट हियरिंग।